Hello everyone, welcome to the session today. Now in today's session, we are going to discuss more entries which actually brings about the difference between the bank balance as per cash book and bank balance shown as per passbook. And then afterwards, we'll be taking up your doubts. Now let's start with the first transaction. The bank reconciliation statement is to be prepared for the month of June. Now what we have done, checks of rupees 9,200 were issued in the month of June, of which 2,200 were presented for payment on 15th of July. बेटा checks of rupees 9,200 were issued. जब चेक इशू होते हैं बेटा तो हमारा कैश बुक डिक्रीज हो जाती है. इट इज शोन 9200 will be shown on the credit side of your cash book bank column, of which 2,200 were presented next month. That means 9,200 minus 2,200, 7,000. That means with 7,000 rupees, our passbook has also been decreased. Cash book बेटा मेरी decrease हो गई है. Passbook is decreased by 7,000, but cash book is decreased by 9,200. Fine, it is decreased by 9,200. Now let us see the effect of this transaction on both the books in the next slide. Now you can see 9,200 is being shown as the payment made on the credit side bank column in the cash book, and passbook just showed a withdrawal of 7,000 in the month of June. Why? Because 2,200 worth of check is being presented in the month of July. So इसका इफेक्ट क्या हुआ बेटा कि अगर आपकी पेमेंट ज्यादा है, दैट मीन्स आपकी जो कैश बुक है उसका बैलेंस 2,200 से आपकी कैश बुक का बैलेंस कम शो हो रहा होगा अगर आप उसके पासबुक के बैलेंस से कंपेयर करोगे तो. क्यों? क्योंकि पेमेंट हमने ज्यादा दिखा दी है और पासबुक का बैलेंस बाय द सेम अमाउंट 2,200 से ज्यादा शो कर रहा होगा अगर मैं कैश बुक के बैलेंस के साथ कंपेयर करूं, क्योंकि हमने यहाँ पर पेमेंट सिर्फ 7,000 की दिखाई है. फाइन, पासबुक में पेमेंट सिर्फ 7,000 की हुई है, वेयर कैश बुक में पेमेंट 9,200 की हुई है. तो अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, तो कैश बुक का बैलेंस क्योंकि 2,200 से कम बैलेंस को शो कर रहा है तो हम 2,200 को कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर देंगे और उसको प्लस कॉलम में शो करेंगे इस अमाउंट को. बट इफ वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद बैलेंस एज पर पासबुक जो कि 2,200 से ज्यादा है, इफ वी कंपेयर इट विद द कैश बुक बैलेंस, सो पासबुक के बैलेंस को 2,200 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2,200 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वील शो दिस अमाउंट इन द माइनस कॉलम इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. I hope that this transaction is clear to everyone. Now the next transaction is discount allowed of rupees 200 was recorded on the debit side of the bank column. Now discount was allowed, but we have recorded this discount allowed on the debit side of the bank column of the cash book. So that means by mistake, see this was an error. This was an error. By mistake, we have shown this discount allowed on the debit side of the cash book in bank column. तो इससे क्या होगा बेटा कि मेरा जो बैंक बैलेंस है अकॉर्डिंग टू कैश बुक वो 200 से इंक्रीज हो जाएगा. फाइन, लेकिन ऐसी कोई ट्रांजेक्शन पासबुक में तो रिकॉर्ड हुई नहीं है. फाइन, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा कि पासबुक का बैलेंस अगर मैं कैश बुक के बैलेंस के साथ कंपेयर करूंगी तो वो 200 से लेस शो कर रहा होगा इफ आई कंपेयर इट विद द कैश बुक बैलेंस. नाउ इफ आई प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद बैलेंस एज पर कैश बुक, फाइन, देन 200 से आपके कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है बिकॉज
200 is being recorded on the debit side of the cash book बैंक कॉलम में, तो हम 200 को कैश बुक के बैलेंस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस अमाउंट को माइनस कॉलम में शो करेंगे इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रही होंगी व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, फाइन, देन आई एम गोइंग टू add 200 in the balance shown as per passbook and I'll show this amount in the plus column. I hope that the transaction is clear to everyone. Now let's come to the next transaction. It says check deposited into bank but no entry was passed in the cash book rupees 500. Now very simple, we have deposited the check into bank, fine, and that means we should have, when we actually are depositing a check into the bank, it becomes the responsibility of the cashier to record this transaction on the debit side of the cash book in bank column. But no entry has been passed and we have received 500 in the passbook. That means passbook का balance बेटे 500 से ज़्यादा show हो रहा होगा if we compare it with the cash book balance, और कैश बुक का बैलेंस 500 से कम शो हो रहा होगा। तो अगेन अब क्या करें इसको रिकंसाइल करने के लिए, अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर कैश बुक बैलेंस बनाते हैं तो कैश बुक के बैलेंस को जो कि 500 से कम शो हो रहा है विद कंपेयर टू द पासबुक बैलेंस, उसमें हम 500 ऐड कर देंगे एंड वील शो दिस अमाउंट इन द प्लस कॉलम इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। But when we are preparing bank reconciliation statement with balance as per passbook, यानी कि मुझे पासबुक के बैलेंस में चेंज करना है जो कि 500 ज्यादा है, किससे, कैश बुक के बैलेंस से कंपेयर करने पे मैंने देखा कि 500 ज्यादा शो हो रहा है पासबुक का बैलेंस, तो पासबुक के बैलेंस को मैं 500 से रिड्यूस कर दूंगी एंड आई शो दिस अमाउंट इन दी माइनस कॉलम। आई होप दैट दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। Now the next transaction is bank charges entered twice in cash book rupees 20. Fine. We have committed an error and we have recorded bank charges twice. Fine. Whereas bank charges is being recorded once in the withdrawal column of the passbook, but by mistake bank charges have been recorded twice. तो इससे इफेक्ट क्या होगा बेटा, मैंने पेमेंट ज्यादा दिखा दी है तो मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम 20 रुपीज से कम शो हो रहा होगा क्योंकि मैंने पेमेंट ज्यादा दिखाई है। तो मेरा बैलेंस, इफ आई कंपेयर द बैंक बैलेंस ऑफ द एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक, तो कैश बुक का बैलेंस 20 रुपीज से कम शो हो रहा होगा और पासबुक का बैलेंस विद कंपेयर टू कैश बुक बैलेंस 20 रुपीज से ज्यादा शो हो रहा होगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि when we'll prepare the bank reconciliation statement, when balance as per cash book is given, तो कैश बुक के बैलेंस में 20 रुपीज ऐड कर देंगे and we'll show this amount in the plus column. And if I'm preparing bank reconciliation statement with balance as per passbook, fine, जो कि पासबुक का बैलेंस 20 रुपीज से ज्यादा शो हो रहा है तो हम 20 रुपीज से पासबुक के बैलेंस को डिक्रीज कर देंगे एंड वील शो दिस अमाउंट इन दी माइनस कॉलम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज checks received entered twice in the cash book rupees 1000. Now we have received a check, fine, the cashier of the business enterprise, he has entered this check twice in the cash book. That means your cash book is debited twice. The bank column of the cash book is debited twice, whereas the passbook is showing the deposit only once. So अगर मेरी बेटा रिसिप्ट साइड इंक्रीज होती है तो मेरा बैलेंस भी इंक्रीज हो जाता है। So the bank balance as per cash book
is going to show 1000 increase. 1000 बैलेंस आपका ज्यादा शो हो रहा होगा if we'll compare it with the balance as per पासबुक. सो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से 1000 कम शो हो रहा है. फाइन, लेट्स रिकंसाइल बोथ द बैलेंसेस. अगर मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद बैलेंस एज पर पासबुक से बनाना शुरू कर रही हूँ रिकंसाइल करने के लिए, तो पासबुक का कैश बुक का बैलेंस 1000 रुपीज से ज्यादा शो हो रहा है, तो 1000 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैश बुक के बैलेंस में एंड विल शो दिस अमाउंट इन दी minus column of the cash book. But when we are preparing bank reconciliation statement with balance as per passbook, अब देखिए पासबुक का बैलेंस 1000 से कम शो हो रहा है. पासबुक का बैलेंस 1000 रुपीज से कम शो हो रहा है विद कंपेयर टू द कैश बुक बैलेंस. तो हम क्या करेंगे, हम पासबुक के बैलेंस को 1000 रुपीज से इंक्रीज कर देंगे and then we will show it in the plus column. We will show this 1000 amount in the plus column of your bank reconciliation statement when we are preparing in as per balance as per passbook. I hope that this transaction is also clear to everyone. Let's move to the next transaction. The next transaction says a post dated check of rupees 900 has been debited in the bank column of the cash book. अब post dated check क्या होता है बेटा, कि check के ऊपर the date mentioned is of some future day. Fine, but what we did, and the date, suppose today is 1st of January 2019, and we have received a post dated check and the date mentioned on the check is 1st of March 2019. Fine. Now what is happening in this transaction, that we have received a post dated check, let's say on 1st January 2019, and the day we have received it, we have debited that check in the bank column of the cash book, and that bank column is increased. The bank column of the cash book is increased, but it could not have been presented in any way. Why? Because the check will be deposited or encashed on 1st of March itself. 1st of March क्योंकि उसके ऊपर डेट लिखी हुई है चेक के ऊपर. 1st of March से पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे. But what we did in this transaction is, let us see the effect on both the transaction of this transaction on both the books. हमने post dated check 900 का बैंक कॉलम कैश बुक में डेबिट कर दिया, यानी कि बैंक कॉलम मैंने 900 से इंक्रीज कर दिया, तो मेरा कैश बैलेंस 900 से कैश बुक में बैंक कॉलम का इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन ये चेक तो इन कैश एट सम लेटर डेट होगा, तो आपका पासबुक इंक्रीज नहीं हुई है. तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपकी पासबुक का बैलेंस अगर हम कैश बुक के बैलेंस के साथ कंपेयर करें तो 900 अमाउंट से कम शो हो रहा होगा. फाइन. सो if we are preparing bank reconciliation statement when balance as per cash book is given, then this 900 rupees will be subtracted from the cash book balance and will be shown in the minus column of the bank reconciliation statement. But when we are preparing bank reconciliation statement with balance as per passbook, पासबुक का बैलेंस 900 से कम शो हो रहा है विद कंपैरिजन विद द कैश बुक बैलेंस, तो हम पासबुक के बैलेंस को 900 से इंक्रीज कर देंगे एंड वील रिकॉर्ड दिस अमाउंट इन द प्लस कॉलम इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द डे. The last transaction is that bank reconciliation statement is to be prepared for the month of April 2017. Now bank charges of rupees 750 as per bank statement, that is passbook, have not been recorded in the cash book.
हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, एंड दीज चार्जेस वर रिवर्स्ड बाय द बैंक ऑन 10th of April 2017. फाइन, और हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं अप्रैल 2017 की ही। इसी मंथ में बैंक चार्जेस 750 के चार्ज हुए, फाइन, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन 10th of April को बैंक ने ये बैंक चार्जेस रिवर्स कर दिए, यानी कि जो अमाउंट 750 पासबुक से जो डेबिट करी थी, है ना, जब बैंक चार्जेस होते हैं तो पासबुक में डेबिट हो जाती है अमाउंट, विड्रॉल हो जाता है इस अमाउंट का, तो अप्रैल मंथ के अंदर ही उन्होंने इस बैंक चार्ज को रिवर्स कर दिया और 750 क्रेडिट कर दिए। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ कि आपका पासबुक का बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया। कैश बुक में तो हमने ये पहले ही रिकॉर्ड नहीं किया था, तो कैश बुक के बैलेंस में भी कोई चेंज नहीं आया। सो दिस एंट्री will not be recorded in the BRS when BRS is being prepared either with the balance as per cash book or balance as per passbook. So this entry will not be recorded in the bank reconciliation statement as the effect of this transaction on both the books is nil. I hope that now all the transactions which actually are going to make a difference between the bank balance as per cash book and balance as per passbook. Fine, we have taken almost all the transactions, and all these transactions are being clear to all of you, and how they are going to be recorded in the bank reconciliation statement. Now let's take a few doubt questions. Now this is the first question. The question says that the bank statement of a customer shows bank balance of rupees 62,000 on 31st of March 2019. On comparing it with the cash book, the following discrepancies were noted. Checks were paid into bank in March but were credited in April, and the amount of the check were 3,500, 2,500 and 2,000. The second entry, checks issued in March were presented in April, and the amount of these checks were 4,000 and 4,500. Checks for rupees 1,000 received from a customer entered in the cash book but was not banked. एंटर्ड इन द कैश बुक का मतलब कि हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. देन पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ रुपीज 1,000 फॉर बैंक चार्जेस एंड अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 2,000 एज इंटरेस्ट. एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन because of which the difference is being taking place between the bank balance as per cash book and the balance as per passbook is the interest on investment rupees 2,500 collected by the bank appeared in the passbook but it was not recorded in the cash book. Prepare bank reconciliation statement showing the balance as per cash book on 31st of March 2019. So in this particular question, see, we are going to start with bank statement of a customer shows bank balance of rupees 62,000. That means this is the balance as per passbook given. So let us start with the solution of this question. Now this is solution number 12 of the question which we had just discussed now. Now the first item is your balance as per passbook, and since it's a positive balance, so it is appropriate to write, let it be a credit balance as per passbook. Credit balance as per passbook, and we have to prepare the bank reconciliation statement as on 31st of March 2019. Since it's a credit balance as per passbook,
So here plus means credit and minus means debit. Fine. So we are having the credit balance, that is positive balance, and the amount is 62,000. Now the next transaction, it says checks were paid into bank in March but were credited in April. We are preparing bank reconciliation statement for the month of March, and there were 3 checks, they were paid into bank. That means जब बेटा हम चेक पे करते हैं तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, चेक्स पेड इनटू बैंक बट दे वर नॉट क्रेडिटेड, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है. So what is going to be the effect? The 3 checks were of rupees 3,500, then 2,500, and the third one is of rupees 2,000. Fine. So if we total them up, we are going to get the total amount of 8,000. 8,000 से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है. मुझे पासबुक के बैलेंस में चेंज करना है, तो कैश बुक के बैलेंस के बराबर लाने के लिए मुझे पासबुक के बैलेंस को भी 8,000 से इंक्रीज कर देना चाहिए. सो आई विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन एज checks deposited. I will write it as checks deposited, checks deposited but not credited, but not credited. Credited का मतलब पासबुक इंक्रीज नहीं हुई थी. अब मैंने पासबुक के बैलेंस में चेंज करना है क्योंकि मैं बीआरएस पासबुक के बैलेंस से बना रही हूँ. पासबुक के बैलेंस को चेंज करके मैं पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल करूंगी विद द कैश बुक बैलेंस. सो कैश बुक इंक्रीज थी तो पासबुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर दिया. नाउ द थर्ड ट्रांजैक्शन, it says there were 2 checks, they were issued, and they were issued in March but they were presented in the month of April, and the amount of the check were 4,000. One check was of 4,000, another check was of 4,500. So total 8,500 checks were issued. जब चेक इशू होते हैं बेटा तो कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, लेकिन पासबुक का बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ है. मुझे पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के बराबर लेकर आना है, तो मैं पासबुक का बैलेंस भी 8,500 से डिक्रीज कर दूंगी और इस अमाउंट को माइनस कॉलम में शो करूंगी. सो आई विल रिकॉर्ड दिस एंट्री एज चेक्स इशूड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. देन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, it says check of rupees 1,000 received from a customer, entered in cash book but was not banked. Fine. That means again हमने cash book को a check of rupees 1,000, it was, suppose this is cash book, it was received, so we have record this amount on the debit side of the cash book, on the receipt side. That means cash book balance is increased by, कैश बुक बैलेंस इज इंक्रीज बाय 1,000, लेकिन बैंक नहीं हुआ ये चेक, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो पासबुक का बैलेंस 1,000 से कम शो हो रहा होगा. तो अब हम पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से रिकंसाइल करने के लिए 1,000 ऐड कर देंगे एंड वी शो दिस अमाउंट इन द प्लस कॉलम. सो in the particular columns we will write check received from customer, check received from customer but not bank, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया था. नेक्स्ट इज पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,000 फॉर बैंक चार्जेस. पासबुक में बैंक चार्जेस शो हो रहे हैं ऑफ रुपीज 1,000, जिससे आपकी पासबुक डिक्रीज हो गई होगी, कैश बुक डिक्रीज नहीं हुई है, तो हम पासबुक को 1,000 से इंक्रीज कर देंगे. रीजन बीइंग क्यों इंक्रीज कर देंगे, जब बैंक चार्जेस होते हैं तो पासबुक डिक्रीज होती है लेकिन कैश बुक डिक्रीज नहीं हुई है, तो पासबुक के बैलेंस को 1,000 से इंक्रीज कर देंगे. एंड इन द सेम ट्रांजैक्शन द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ
credit of the bank interest. Fine, bank has credited the interest and it is being shown in the passbook. लेकिन बैंक इंटरेस्ट तो क्रेडिट हो गया पासबुक में, लेकिन कैश बुक इंक्रीज नहीं हुई है बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 2000. तो हम 2000 से पासबुक के बैलेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम कर देंगे. And the last transaction says that interest on investment 2500 credited by bank appeared in the passbook. Fine. बैंक ने क्या किया है, कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 का कलेक्ट किया था और पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया. लेकिन कैश बुक में ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट करी थी. जब बैंक कलेक्ट करेगी बेटा तो बैंक का पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, तो ऑब्वियसली पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, तो हम पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच करने के लिए 2500 को माइनस कॉलम में शो करके इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So the plus column total is 62 plus 8 70, 70 plus 2 72,000. And if I subtract the minus side column total, which is equal to 8 plus 2 10 12 13,000. If I subtract 13,000 from 72,000, we are going to get the balancing figure as 59,000. 59,000, and this total is also 72,000. And this 59,000 is nothing but the debit balance as per, this is the balancing figure, this will be debit balance as per cash book. Debit balance as per cash book. I hope now this solution of this question number 12, is clear to everyone. This question was taken from T.S. Garewal 2020 edition. I think that the solution of this question is clear to everyone. That's all for today from my side. In the next class, we'll be taking more of your queries. So be ready with your questions. Hope all of you have enjoyed the learning today. Thank you very much.